Hello everyone. Our today's topic is network analysis. Firstly, we will understand what is network. A network is a combination of several activities and events. We all know in a big project, many activities are done at the same time, and there are many activities which can be started only at the completion of the other activity. So, for through study of the project, the real job is to get the complete detail about the project and then to discover a new, better, and quicker way to get the work done. This can be done by drawing some suitable diagram showing various activity and their position in the project. It can also be used to study that in what way the delay in any activity can affect the entire project, both in time and money. A network can be defined by a set of points or nodes that are connected by link or arrow. The important characteristics are given here. So first one is the objective is to be finished within a specific time, otherwise there is a penalty. Second characteristic is various activities are to be completed in a certain order, and there are some activities which can start on the completion of other activities. Third one is the cost associated with any activity is proportional to its time of completion. And fourth characteristic is there can be bottlenecks in the process and the resources to be allocated are limited. Now we discuss how we draw a network diagram. A network diagram is based on three main symbols. First symbol is arrow, second symbol is circle, and third symbol is broken arrow. Arrow representing various activities, and circle showing various events or nodes, and broken arrow showing dummy activities for logical sequence. Now there are some rules for drawing a network diagram. Our first rule is the starting event and ending event of an activity are called tail event and head event respectively. The second rule is the network should have a unique starting node, means tail event. Similarly, the network should have a unique completion node, means head event. Our fourth rule is no activity should be represented by more than one activity in the network. Next rule is no two activities should have the same starting node and the same ending node. Next rule is dummy activity is an imaginary activity indicating precedency relationship only. Duration of a dummy activities is always 0. Remember it, duration of dummy activities is always 0. There are some suggestions are given here. First suggestion is time flows left to right always. Arrow should be kept straight, not curved. Next one is arrow should not cross each other. Where crossing cannot be avoided, bridging should be done. In a network diagram, there should be only one initial event and one ending event. Now, how do we construct a diagram? We will take one example here. The example is draw the network diagram for the project whose activities and their precedence relationship are given below. First column is given here activities and second column is given here precedent activities. Activities are A, B, C, D, E, F and precedent activities are nil A, B, C, D, E. So let's start with constructing the project network. For constructing the project network, we have to find the number of activities who does not have an immediate precedence. Here we have only one activity who do not have immediate precedence. So first we have start with activity number 1, which is A. Now see in table
second activity is given which is B, and its immediate precedent is given A. Means if when A is complete, then B start after A. Similarly, third activity is also C, and whose immediate precedence also A. Now our fourth activity is D, and its immediate precedence is given which is B. It means when B is completed, then D starts. Similarly, activity E, which its immediate precedence is given which is C, means when C is completed, then we start activity E. And for activity F, its immediate precedence are given D and E, both are combined. So let's start with constructing the project network. Okay, now what are given in our question? The activities are A, B, C, D, E and F, and procedure activities are given here: null, A, B, C, D and E combined activity. Okay, these are our activities and these are our procedure activities. Okay, now we construct a diagram. First, there is given A is activity whose procedure activities are null. मीन्स एक फर्स्ट हमारी ऐसी एक्टिविटी है जिसका प्रेसिडेंट एक्टिविटी जो है वो एब्सेंट है. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट एक्टिविटी होगी वो स्टार्टिंग एक्टिविटी होगी विच इज ई. ओके, नाउ सेकेंड एक्टिविटी इज गिवन विच इज बी, और इसका जो प्रेसिडेंट एक्टिविटीज़ है वो हमारा क्या ए है. सिमिलरली नेक्स्ट एक्टिविटी सी इज गिवन हियर, और सी का जो प्रेसिडेंट एक्टिविटी वो भी हमारा कितना है, ए गिवन है. मीन्स ए जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट होने के बाद में हमारा बी और सी एक्टिविटी वहाँ से क्रिएट होगा. मीन्स ए एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद यहीं से हमारा बी एंड सी एक्टिविटी जो है बोथ एक्टिविटी हमारी यहाँ से क्रिएट होगी. दिस इज अ बी एक्टिविटी एंड दिस इज सी एक्टिविटी. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्टिविटी इज कंप्लीटेड. नाउ फोर्थ एक्टिविटी इज गिवन विच इज़ डी, और इसकी जो प्रेसिडेंट एक्टिविटी है वो क्या गिवन है, बी. मीन्स बी एक्टिविटी जब कंप्लीट होगी तब हमारा डी एक्टिविटी स्टार्ट होगी. बी एक्टिविटी जब कंप्लीट होगी तब हमारा डी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होगी. एंड नेक्स्ट ई एक्टिविटी, तो सी एक्टिविटी जब हमारी कंप्लीट होगी तो तब हमारी ई एक्टिविटी स्टार्ट होगी. मीन्स सी एक्टिविटी जब हमारी कंप्लीट है तब हमारा ई एक्टिविटी स्टार्ट है. नाउ कि डी और ई इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा एफ एक्टिविटी स्टार्ट होगा. बट देयर आर डी एंड ई एक्टिविटी आर डिफरेंट एक्टिविटी, सो हमें इन दोनों को कंबाइन करना होगा. और यहाँ पर कोई ऐसा वे नहीं है जैसे हमें इसको कंबाइन करना है. इसको वी यूज़ डमी एक्टिविटी, तो हम यहाँ पर एक डमी एक्टिविटी यूज़ करेंगे. वी नो डमी एक्टिविटी इज़ एन इमेजिनरी एक्टिविटी हुज ड्यूरेशन इज ऑलवेज ज़ीरो. तो डमी एक्टिविटी हम यूज़ करेंगे. देन दिस एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी कंबाइन हो गई. अब हमारे यहाँ से एफ एक्टिविटी हम क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज अवर नेटवर्क डायग्राम. अब हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं. जो हमारा फलकर से रूल होता है उससे हमारी नंबरिंग होती है 1, 2, बी एक्टिविटी 3 and 4, 5, 6 and 7. ये हमारा कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम बन गया. बट एक रूल होता है कि जो हमारा अपडेटेड डायग्राम होता है, लास्ट जो डायग्राम होता है उसमें डमी एक्टिविटी शो नहीं होती है जब तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो. तो हम इस डमी एक्टिविटी को रिमूव अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना होगा. मीन्स अगर हम इस ई एक्टिविटी को सेपरेट में बना के इस एक्टिविटी को डी एक्टिविटी में कंबाइन कर दें तो हमारी ये जो है नोड ये कंबाइन एक्टिविटी हो जाएगा. तो डमी एक्टिविटी हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारा एफ एक्टिविटी डायरेक्टली कम होगा. सो अपडेटेड डायग्राम इज 1A, B, C, D एंड ई एक्टिविटी जो है हम वो डी के साथ में कंबाइन कर देते हैं. सो फिफ्थ नोड इज हमारा कंबाइन नोड डी एंड ई. नाउ क्रिएट एफ एक्टिविटी फ्रॉम हियर. दिस इज अवर नेटवर्क डायग्राम. ओके, थैंक यू.